Hello everyone. So this is the second part of the chapter. The chapter actually for ICSE, it is remainder theorem and factor theorem. So we finished remainder theorem in the last class. Today we are going to finish with factor theorem. This is important chapter for you because this chapter is going to give you 4 to 5 marks. So 1 mark तो MCQ में आता है और 3 mark या 4 mark का एक question आने वाला है. And this will be helpful for you and very easy chapter to complete. As you can see, there are only 2 classes in which in 2 classes I'm completing the chapter with PYQs. Basically, they call it as remainder theorem and factor theorem, but basically this chapter is based on remainder theorem. Factor theorem वैसे देखा जाए तो कुछ है नहीं, है तो वो remainder theorem है. Right, so once you understand, if you have understood the last class and 5 questions that we solved in the last class, this is also a very easy class for you. All right, let us move on to the chapter. So let me share the screen for you. I hope the screen is visible to you right now. So this is something that we have done in the last class, remainder theorem. All right, remainder theorem, again I am repeating, is suppose अगर आपने क्या किया था इधर remainder theorem. So let me take you to the first page of the remainder theorem. हमने जो किया था, this is very important page. So first we understood the polynomial क्या है, then we understood the remainder theorem. So remainder theorem said कि if there is a polynomial p of x, if it is divided by any linear polynomial x minus a, then the remainder is given by p of a. मतलब x को a से अगर replace करते हैं और value polynomial का जो मिलता है, that is the remainder, right? We understood this for x plus a, ax plus b, everything. Now, what is important for remainder theorem is again this part. कि अगर बेसिकली ये रिमाइंडर थियरम आता कहाँ से, अल्गोरिदम जो है ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे 2 कोशेंट है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, एंड whatever is remaining is called as a remainder. So ये अपने को यहाँ पे मिल रहा है, ये रिमाइंडर मिल रहा है, राइट? सो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं that is called as a factor theorem, right? So let me take you to this page. This is something, the last question that we did, right? Factor theorem अगर हमको समझ के लेना है, so let us come to factor theorem now. All right, let me tell you, factor theorem actually कुछ है नहीं. तो basically factor theorem में क्या है? फैक्टर मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है तो फैक्टर है. सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं. तो 6 अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो इसके फैक्टर्स है 1, 2, 3 एंड 6. दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 6, राइट? व्हाट डज दिस मीन्स कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर, 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, देन 2 3s are 6 and the remainder is 0. So if it is a factor, that means the remainder is 0, right? Once again I'm using the word remainder. तो बेसिकली जो रिमाइंडर थियरम में सीखा था वही है, बट यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 हो रहा है तो फैक्टर क्या होगा, वो जो 2 है that is a factor, right? For example, I'll take another example. So 21 is there. Let's say for example if I divide this by 4, then the remainder is 1. The remainder is 1. But imagine, that means 4 is not a factor of 21. 4 is not a factor of 21, right? But if I divide this by 3, what will happen is the remainder is 0 because 3 7s are 21. That means 3 is a factor. When the remainder is 0, I can say that 3 is a factor of 21, right? तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? If p of x is, let's say, divided by x minus a linear quantity. If p of x is divided by x minus a linear quantity,
राइट. अकॉर्डिंग टू अस रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर थियरम में सीखा था, रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, राइट. बट इफ फैक्टर थियरम ये कहता है, बट इफ पी ऑफ ए इज जीरो, अगर जीरो आ रहा है, then I can say that x minus a is a factor of p of x, राइट. सो यहाँ पे देखो, जब जब ये रिमाइंडर जीरो आता है, इट मीन्स इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर. दैट्स इट. लाइक ये ए कहाँ से लेके आए, हमने पिछले वाले क्लास में सीखा था. अगर नहीं देखा है तो प्लीज वो क्लास पहले देख लो, फिर ये क्लास पे आ जाओ, राइट. सो दैट्स इट, नथिंग इन दिस फैक्टर थियरम. एक जो छोटी सी चीज है डिवीजन की, जब वो बात आएगी मैं आपको सिखाने वाला हूँ. So let us start with the problems. Find a value of a if he says x minus a is a factor of this polynomial, right? तो यहाँ पे p of x कितना है? p of x है 3x cube plus x square minus ax minus 81, right? Now if x minus a is a factor, ऐसे बोल रहे हैं, right? Then what will happen is, meaning of that is p of a is equal to 0. How did I get a? Again, ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था, x माइनस a फैक्टर है तो इसको 0 ले लो, तो x का वैल्यू कितना हो गया? a. So we have to replace x by a, right? In this case, p of a, that means wherever you see x, you are going to replace it by a. You are going to replace it by a. So this is a cube plus a square minus ax minus 81. I'm so sorry. A into a is equal to 0, right? So you can see 3a cube plus a square minus a square is equal to 81. I'm taking it on the right side, it becomes plus 81. A square and minus a square gets cancelled. I have 3a cube is equal to 81, so I'll divide both sides by 3. That becomes 81 upon 3, right? So the value of a cube is 3 2s are 6 and 3 7s are 21. We can see that a cube is 27 is nothing but 3 cube. So agar base power same hai, to base will be equal. That means the value of a is 3, right? This question you get it for 3 marks. Now this is a 4 marks question. X minus 2. If x minus 2 is a factor of this, find the value of k. पहला पार्ट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है. So he says x minus 2 is a factor of the polynomial. X minus 2 is a factor. That means what is the value of x? That is equal to 2. That means if my polynomial is x cube plus 2x square minus k into x plus 10. This is the polynomial, right? If x minus 2 is a factor, right? That means what will happen? P of 2, because x का value क्या लेना है, is equal to 0 होना चाहिए if it is a factor, right? In that case, how do we find out P of 2? जहाँ पे भी x दिखे in the polynomial, replace it by 2 plus 2 into 2 square minus k into 2 plus 10 is equal to 0. So this is 8 plus 2 into 4 minus 2k plus 10 is equal to 0. You can see 8 plus 10 is 18. 2 into 4 is 8
minus 2k is equal to 0. Now 18 plus 8 is 26. I take this 2k on the right hand side, it becomes minus का हो जाएगा plus, and the value of k is 26 upon 2. That means the value of k is 13. Right? So I finished this first problem. I repeat, if x minus 2 is a factor of this polynomial, find the value of k. So we got the value of k now. Hence determine whether x plus 5 is also a factor of the given expression. Right? ये अपने को चेक करना है whether x plus 5 भी उसका फैक्टर है कि नहीं है. So right now for me p of x का वैल्यू हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस k का वैल्यू है 13x plus 10. Now he is asking us to check for x plus 5. So x plus 5 को अगर मैं 0 लेता हूं तो x का वैल्यू क्या बनना चाहिए? That is equal to minus 5. All right. Now let me find out a p of minus 5. What is p of minus 5? P of minus 5. Wherever there is x, I'll replace it by minus 5. Minus 5 cube plus 2 into minus 5 square minus 13 into minus 5 and plus 10. Right? Now, the negative power, if the negative number is raised to odd powers, it remains minus. If it is raised to even power, it remains positive. Right? I repeat, if a negative number is raised to odd power, that is 3, it remains minus. 5 का क्यूब कितना होगा? 5 into 5 into 5, that is 125, plus 2 into minus 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. Minus 13 into minus 5 is 65 plus 10. Okay. Now, minus 125 plus 50 plus 65 plus 10. You can see here minus 125 I'm keeping as it is. 50 plus 65 plus 10. सिंपल कर देते हैं, आसान कर देते हैं. अगर मैं लेता हूं अगर इफ आई एम गोइंग फॉर माइनस 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 कितना होता है? 60 होता है. 60 प्लस 65 कितना होता है? 125 होता है. सो दिस बिकम्स 125 एंड माई आंसर इज 0. अगर ये 0 आ रहा है p of minus 5, which means that means x plus 5 is also a factor of p of x, जो भी पॉलिनोमियल है, या फिर आप p of x लिख सकते हो, या फिर आप वहां पे जो एक्चुअल पॉलिनोमियल है वो भी आप लिख सकते हो. सो दिस इज देयर. ऑलराइट. नाउ let us come to the next question, number 8. If x plus 2 and x plus 3 are factors of this polynomial, find the values of, if it is a factor. So let me label the polynomial as p of x first. अब p of x क्यों करना है? तो you can label it anything. You can write p of x, q of x, f of x, anything, whatever you like. So it is x cube plus ax plus b. This is the polynomial. Now the first factor is x plus 2. The first factor is x plus 2. So when x plus 2, I equate it to 0, I get value of x as minus 2. All right. Now, that means, okay, now if x plus 2 is a factor, then what will happen? इसका मतलब होगा p of minus 2. कहाँ से minus 2 है? यहाँ पे चेक कर लो, हमने कैलकुलेट करके रखा है. p of minus 2 becomes 0. That means wherever I see x, I have to replace it by minus 2. So minus 2 cube plus a into minus 2 plus b is equal to 0. Remember, negative number raised to odd power minus, negative number raised to even power, it will be plus. So this is minus 8 minus 2a plus b equal to 0. That means minus 2a plus b becomes plus 8. This is my equation number 1. Let us
Go to the next point. If it says if x plus 3 is also a factor, ये भी factor है, is a factor of p of x, then what will happen? Then that means, remember, x plus 3, I have to equate it to 0. That means value of x becomes minus 3. So I will find out p of minus 3, which will be equal to 0, because if it is a factor, the remainder is always a 0 value, right? That means I have to replace x by minus 3 cube plus a into minus 3 plus b is equal to 0. Now, minus 3, negative number raised to odd power is minus. That means this is minus 27 minus 3a plus b is equal to 0. All right. Now, that means minus 3a plus b is equal to 27. Let this be equation number 2. Right now we have two equations and two unknowns, that is a and b. ये निकालने को बोला, find a value of a and b. So I'll take these two equations and solve this simultaneously. Minus 2a plus b is equal to 0. This is equation number 1, suppose, and minus 3a plus b is equal to, I'm sorry, this is not 0, this is 8. This is 8 and this is 27. This is equation number 2. Now I subtract these two equations. यहाँ पे जब subtract करते हैं दो equations को, तो sign change कर लेते हैं वो अपनी. Then minus 2a plus 3a is a, b and minus b gets cancelled, and 8 and minus 27 is minus 19. So I have the value of a as minus 19. If I substitute this value of a as minus 19, substituting, a is equal to minus 19 in equation, you can substitute in any equation. If I take it in equation 1, that means minus 2 into minus 19 plus b is equal to 8. That means 38 plus b is equal to 8, and the value of b is 8 minus 38. So b is equal to minus 30, right? Remember, this is very important in this kind of problems. You should write the final answer. So a value is minus 19 and b value is minus 30. सिर्फ वो निकाल के छोड़ना नहीं, आपको final answer लिखना है. All right. Let's come to the next question. Now what happens is, if this has x minus 2 as a factor, ये एक स्टेटमेंट हो गया, and leaves a remainder 3 when it is divided by x minus 3. मतलब जब x minus 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आएगा, because it is a factor. And अगर x minus 3 से डिवाइड कर रहे हो, then the remainder is 3, right? When it is a factor, remainder is always 0. Okay, so let me label this first. Polynomial को, let the polynomial जो दिया है उसका नाम हम दे देते हैं p of x is equal to x cube plus ax square plus bx plus 6. Now he says x minus 2 is a factor. X minus 2 is a factor. That means the value of x is equal to 2. Right now, see, important thing is, if you're watching this video live or afterwards also, very important, even if you're watching this video live, very important thing, because अभी देखो problems वही बार बार repeat हो रहे हैं. Now if you have understood the concept, थोड़ा थोड़ा change करके वो दे रहे, तो you pause the video, you try to solve this problem first on your own, and of course you can then चेक ऑन द वीडियो कि आंसर्स आपके सही है. ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू चेक. कभी कभी ये होता है ना कि आप आंसर तो निकाल लेते हो, बीच वाले स्टेप्स गलत हो जाते हैं. सो चेक फॉर द वीडियो, बट आफ्टर you try to solve the problem, you check with the videos, right? Don't just watch the videos. I usually keep on saying, notebook और पेन लेके बैठ जाओ, इसको solve करो, अपने आप कोशिश करो इसको. Now he says that this is a factor, that means x is equal to 2. So if x minus 2 is a factor,
what will happen? What will happen in that case? P of 2 must be equal to 0. That means 2 x, जिधर भी x दिखे उसके बदले 2 लिखना है अपने को. 2 क्यूब plus a into 2 square plus b into 2 plus 6 is equal to 0. All right. Now what will happen? A cube, 2 का cube है 8 plus 2 का square है 4 plus 2b plus 6 is equal to 0. So we have 4a plus 2b. Now 8 plus 6 is 14. 8 plus 6 is 14. I am taking that 14 on the right hand side and I get minus 14. ऑल राइट, इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. ये एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, बट लेट मी डू समथिंग पहले. इट सेज x minus 3. नाउ सी x minus 3 लीव्स द रिमाइंडर एज, सो x minus 3 की बात कर रहे हैं तो मुझे क्या लेना है? x का वैल्यू. रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा, राइट. सो लेट मी फाइंड आउट ऑल्सो p of 3. I'll find out the value of p of 3 is equal to, according to him the remainder is 3. According to him the remainder is 3. तो जहां पे भी x दिखे तो I'll replace it by 3 plus a into 3 square plus b into 3 plus 6 is equal to 0. राइट. पॉलिनोमियल पे जहां पे भी x दिखे you have to replace it by 3. Again, I am so sorry. यहाँ पे we already know that after doing this, the remainder has to be 3. All right. So this is 27. 3 का क्यूब 27 है plus 9a plus 3b is equal to, remember 6, I take it on the other side, it becomes minus 6. Okay. My 3 minus 6 is minus 3. So 9a plus 3b will be equal to minus 30. क्यों minus 30 आ जाएगा? Because 27 I'm taking it on another side, other side, that becomes minus 27. Minus 3 and minus 27 होगा minus 30. अब देखते हैं यहाँ पे, because I was waiting for this, but यहाँ पे मैं थोड़ा changes कर लेता हूँ. I'll divide this by 2. This becomes 2a plus b is equal to minus 7, and this is my equation number 1. ओके, यहाँ पे मैं 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो आई गेट 3a plus b is equal to minus 10. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. इफ यू ऑब्जर्व दिस, अभी इसका जो इक्वेशंस भी आया है ना, दे आर सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम ये जो किया था हमने 2018 का. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू ट्राई दिस ना वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसमें अभी मुझे सिखाने के लिए एक ही चीज बची है, डिवीजन कैसे करना है, विच आई एम कमिंग टू मे बी 2-3 प्रॉब्लम्स. आई एम वेटिंग फॉर दिस टू हैपन. Right now, so if I take 2a plus b is equal to minus 7, this is equation number 1, and 3a plus b is minus 10, this is equation number 2. I just have to subtract it, so this will change the sign, everything will change its sign, and 2a minus 3a is minus a, b minus b gets cancelled, minus 7 plus 10 is 3, so the value of a is minus 3. Let me substitute this, substituting a is equal to minus 3 in equation, any equation. So chalo 2 lete for a change, because in the previous question I substituted in 1. So if I do this, 3 into minus 3 plus b is equal to minus 10. Minus 9, 3 into minus 3 is minus 9 plus b is equal to minus 10. The value of b is minus 10 plus 9. That means the value of b is minus 1. Remember, most important thing, once you finish everything, जो पूछा है वो आखिर में लिखना है, b is equal to minus 1. And this completes your problem. So you get 4 marks in this question, right? I think you should try this question, because if x minus 2 is a factor, just like here it was there, and
when it is the expression is divided by x minus 3, the remainder is 52. यहाँ पे remainder 3 था, यहाँ पे remainder 52 है. I think that you should try this problem, right? So take this as a homework. This is a 2013 question. I am coming to this problem towards the end. ये by mistake यहाँ पे लिखा गया था. This is now the problem we have to consider. Now, what must be subtracted from 6x 16x cube, ये जो polynomial दिया है, so that a resultant expression has 2x plus 1 as a factor. तो देखो, अगर वो factor होना है तो रिमाइंडर 0 होना जरूरी है. तो अगर रिमाइंडर जो कुछ भी आया है, अगर बाय एनी चांस इफ देयर इज सम रिमाइंडर, that should be subtracted so that the remainder becomes 0, right? Logically समझो, he wants 2x plus 1 to be the factor of this polynomial, right? If 2x plus 1 is a factor, that means the remainder has to be 0, right? Now if I am getting remainder, मान लो 2 आया मेरा remainder after finding out the after using remainder theorem, right? अगर 2 आ रहा है तो मुझे क्या करना है? I have to subtract by 2 so that the remainder becomes 0. Alright, let us understand. अगर नहीं समझा तो बहुत ही simple सा problem है. This is there for 3 marks. So let me say that the p of x value is 16x cube minus 8x square plus 4x plus 7. Now because 2x plus 1 is equal to 0, okay, so 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, and x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2. So the value of x has to be taken as -1/2. Now if I do so, what will happen is p of -half is equal to, so wherever I see x, I have to replace it by -half. So 16 minus half cube minus half square प्लस 7. ओके, सो जिधर भी मुझे x दिखा मैंने माइनस हाफ से रिप्लेस किया. तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट? नाउ 16 इंटू, देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, निगेटिव नंबर रेज टू ऑड पावर इज -1/2 का क्यूब. 2 का क्यूब होता है 8, -8 1/2 माइनस है, रेज टू इवन पावर इट बिकम्स प्लस. तो 1/2 का स्क्वायर दैट बिकम्स 1/4 -2 प्लस 7. 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, right? So this is -2 -2 plus 7 which is equal to 1. तो मेरा रिमाइंडर क्या आया? जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, whatever the polynomial is given to me, if I am dividing the polynomial by 2x plus 1, I get the remainder as 0. Sorry, I get the remainder as 1. But I need the remainder as 0 because उसको फैक्टर बनाना है. तो रिमाइंडर कितना होना जरूरी है? 0. तो रिमाइंडर 0 बनाने के लिए मुझे किससे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? 1 से सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है. Therefore, we must subtract 1 to get 2x plus 1 as a factor. As a factor. Remember, तो मान लो इधर अगर 6 होता, राइट? अगर मान लो इधर 6 होता, इधर 6, सो इधर मान लो 6 होता, राइट? 1 से सब्ट्रैक्ट करता मतलब 6 आ जाता ना, तो इधर भी 6 आ जाता. तो इस केस में क्या हो जाता? रिमाइंडर 0 हो जाता. एंड देन आई कुड हैव सेड कि 2x plus 1 is a factor. Alright, now let us come to this question. Now this is something new. यहाँ पे कुछ नया करने वाले हैं. तो ये पार्ट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट? फॉर नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, अगर मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं किया तो आपको करना जरूरी है फैक्टराइजेशन थ्योरम. स्पेशली मेरा क्लास नंबर 2 या 3 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो था वो आपको करना बहुत जरूरी है. Otherwise you will find it difficult to solve this part of the problem. All right,
नाउ देखो पहले क्या बोला है कि इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये तो क्वेश्चंस हम यहाँ पे भी कर रहे थे, यहाँ पे किया है हमने, ये सब वही तो किया था। 7th में k निकाला था, इधर a b निकाला था, वही काम कर रहे थे अभी। ऑलराइट, ओके। नाउ इफ आई say that x minus 2 is a factor, तो अगर x minus 2 फैक्टर है that means x minus 2 का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। In this case p of, let me say that p of x, अच्छा ना इन दिस केस स्पेशली अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे q of x लेता हूँ बिकॉज वहाँ पे p इन्वॉल्व है। तो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज आई टेक दिस, नाम बदला है और कुछ नहीं है, काम वही करना है अपने को, राइट? नाम बदलने से काम नहीं बदलता इधर। सो आई विल फाइंड आउट q of 2, राइट? एंड इफ यहाँ पे if I say q of x is a factor, I'm so sorry, x minus 2 is a factor of q of x, that means q of 2 जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट ना, q of 2 0 है मतलब जिधर भी x दिखे अपने को 2 से रिप्लेस करना है। 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस p इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 का क्यूब है 8, 2 का स्क्वायर है 4, माइनस 2p minus 4 is equal to 0. That means 16, 2 8s are 16, minus 2p, right? और minus 4 minus 2 कितना हो जाता है, minus 6 is equal to 0. That means minus 2p, 16 minus 6 is 10 is equal to 0. So minus 2p is equal to minus 10 and the value of p is 5. Minus 10 divided by 2 minus 2 rather is 5. So ये क्वेश्चन हो गया। With this value of p, factorize the expression completely. Now this is very important part for you, right? So understand this, ये कुछ नया करने जा रहा हूं मैं। All right, so we already know that x minus, with this actually the expression becomes this, I'm so sorry, this is p के बदले क्या आएगा, 5 आएगा, minus 2. We already know that x minus 2 is a factor. We already know that x minus 2 is a factor. तो बाकी पूरा फैक्टराइज करने के लिए हाउ डू आई डू दिस? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड. Remember this, because x minus 2 is a factor, let me divide this x minus 2, 2x cube minus x square minus 5x minus 2. Look at this part, very 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 important, right? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब हम डिवीजन करते हैं पॉलिनोमियल्स का, कुछ यहाँ पे अलिखित नियम है जहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, राइट? द इक्वेशन फॉर्मेट हैज टू बी फ्रॉम हायर पावर टू द लोअर पावर। मतलब आपने देखा पहला टर्म एक्स क्यूब का, दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर का, तीसरा टर्म एक्स का है और चौथा टर्म कांस्टेंट का है। सो इट हैज टू बी इन द ऐसे हायर पावर से लोअर पावर तक जाना जरूरी है। बीच वाला टर्म अगर नहीं है, मान लो 5x होता ही नहीं, फिर भी हम लोग क्या करते, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखते, बट इट हैज टू गो फ्रॉम हायर पावर टू लोअर पावर। अगर उन्होंने कुछ मिक्स करके दिया है तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उस ऑर्डर में अरेंज करें। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज एवरीथिंग, right? Now because I know that x minus 2 is a factor, now I'm going to divide this polynomial by x minus 2. Let me check, let me show you how to do everything in this case. अभी ये ठीक से समझ लो। First problem I'll be taking some time, rather some more time to explain you, right? Once you arrange this, understand this,
द फर्स्ट टर्म जो डिवाइजर का है x है, एंड फर्स्ट टर्म जो डिविडेंड का है वो 2x³ है. इसके ऊपर पूरा फोकस करो. All right. So from x, if I want 2x³, from x, if I want 2x³, I will have to multiply it by 2x. तो क्वोशंट में मेरा टर्म आ जाएगा 2x. Understand? From x, if I want 2x³, I will have to multiply this x by 2x square so that I get 2x³. Right? अभी आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि सर इतना दिमाग नहीं चलेगा हमारा, एंड आई एम ओके विद दैट. इफ यू डोंट नो वेयर टू गेट दिस 2x² फ्रॉम, सिंपली मुझे जो चाहिए अपने आप से ये बात कर लेना, मुझे जो चाहिए वो क्या है 2x³. मेरे पास क्या है x है, इसको डिवाइड करना रफ वर्क में. Remember, what I want is 2x³ and what I have is x. So divide these two terms in rough work, and the answer that you get is you cancel one x and you get 2x². So 2x² is a part of my quotient. It means I'm going to multiply this by 2x². So if I multiply this by 2x², what happens is 2x² into x is 2x³. Also I will multiply 2x² by -2, it becomes minus 4x². Remember, minus 4x². The next step is always subtract. When we subtract, it changes the sign. So here, what will happen? 2x³ minus 2x³ gets cancelled. Minus x² plus 4x² is 3x². I will take this minus 5x down now. Minus 5x. आप सब कुछ ले सकते हैं नीचे, but it is okay if you take one term at a time. Now, remember, I have the divisor as x and I want the dividend as 3x square. So what should I do now? What should I multiply by? x को किससे multiply करोगे तो 3x square मिलेगा. I have to multiply this by 3x. But sir, if I don't understand how to multiply or what to multiply, what should I do? यहाँ पे I'm giving you simple trick. Once again, same thing. I want 3x square and I have x, right? Divide it and I get 3x. So I will multiply by 3x. Right? So when I multiply by 3x, I am not only multiplying 3x to only x, I will be multiplying the all terms. So 3x I am multiplying to the all terms. Yahan pe. So 3x into x is 3x square and 3x into minus 2x is minus 6x. I will subtract the two terms and they will change the sign. Now let me check the remainder. 3x square minus 3x square gets cancelled. Minus 5x plus 6x is x. Now I will bring this minus 2 down. Okay. Now, remember that x minus 2 is there. So I have x. Let us only focus on first term. I have x. I want x. So I will have to multiply by 1. So this becomes x minus 2. I subtract them and I get the remainder as 0. All right, I hope you understood. I will be explaining one more problem. Don't worry. You repeat this video, whatever you want. पीछे जाओ, वापस देखो, pause करो. Take your time, because if you understand this thing, you can solve many problems. Right now, okay, chalo. I'll write the QX part in another format again. QX is nothing but, remember that this is my dividend. If you remember the first रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पेज, राइट? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज x minus 2 into divisor is this is divisor, this is my quotient and this is my remainder, right? Okay, so I will write divisor into quotient plus remainder लिखने की जरूरत नहीं because it is 0. Now the question was to factorize the expression completely. So have I factorized completely? I have done it partly now, because if you look at the second bracket, it is 2x square plus 3x plus 1, which is a quadratic factor.
राइट। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किया, हेंस आई सेड कि अगर ये पार्ट समझना है तो आपके पीछे वाला चैप्टर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड क्लास जो है वो आपको समझ लेना चाहिए। सो x-2 तो आ गया है यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे राइट a इंटू सी दैट इज 2c, सॉरी 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन 3 आ जाए, एंड इट इज वेरी सिंपल, आई विल राइट 2x² plus 2x plus 1 x and plus 1. Remember, I may not get into the details of this because this is a quadratic equation part. You go back and understand this. So this becomes x minus 2, 2x as a common term, bracket में आएगा x plus 1, फिर remaining two terms 1 common, bracket में आएगा x plus 1. That means my complete factorization is x minus 2, x plus 1 is a common factor, and 2x plus 1. So this is complete factorization, right? And I will write complete factorization as, that means 2x cubed minus x square minus 5x minus 2 can be written as x minus 2, x plus 1, 2x plus 1. Remember, this chapter is easy, standard format है, problems के कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है आज तक, and this is going to give you 4 to 5 marks, 1 mark in MCQ and 3 or 4 marks question. So this question, if they ask you in the exam, that is a 4 marks question. Let us try to understand division once again. All right, ये क्वेश्चन में देखते हैं. Using factor theorem show that x minus 3 is a factor of, and hence factorize the given expression completely. Similar kind of question. So x minus 3 is there. So he says, let me say that p of x is x cube minus 7x square plus 15x minus 9. All right. Now he says that x minus 3, if x minus 3, ओके, सो अपने को प्रूव करना है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे प्रूव करना है, अपने को दिया नहीं है. ही सेज यूजिंग दिस प्रूव दैट और शो दैट इट इज अ फैक्टर. सो x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आता है 0. हेंस आई विल फाइंड आउट p ऑफ 3. p ऑफ 3 इज, जहाँ पे भी x दिखे 3 से रिप्लेस कर लो, 3 क्यूब माइनस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 minus 9. All right. Now 3 cube is 27 minus 7 into 9 plus 45 minus 9. Understand? 27. Okay, I'll do one thing. 27. पहले ये तो कर लेता हूँ मैं. 27 plus 45. What is 27 plus 45? 27 plus 45 is 72. 27 plus 45 is 72. 72 minus 9. 72 minus 9 is 72 से अगर 10 निकाल देते हैं 82. जब भी माइनस 9 करना है ना, 10 निकाल दो, दैट इज इजी, एंड प्लस 1 कर दो. सो 72 माइनस 9 इज 62 प्लस 1 इज 63. दिस इज 63 and 9 7 the 63. So the answer is 0. That means x minus 3 is a factor. तो ये तो पक्का हो गया, x minus 3 is a factor of the polynomial p of x. ये तो पक्का हो गया. ऑलराइट, नाउ सवाल क्या है, इसको फैक्टराइज कर लो. फैक्टराइज करना मतलब क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को डिवीजन करना है, राइट. रिमेंबर दिस, x माइनस 3 से हम डिवाइड करेंगे बिकॉज अपने को अभी पता चल गया है कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर. सो x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर plus 15x minus 9. All right. Now I have x cube, sorry, I have x, ठीक है, and I want x cube first term, right. नहीं पता चल रहा है, I will divide x cube by x.
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ इंडाइसिस 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, एंड इफ आई डिवाइड द डिवाइजर, इफ आई मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय एक्स स्क्वायर, आई गेट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, चेंजेस होंगे, एक्स क्यूब गेट्स कैंसल्ड, -7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज -4x स्क्वायर। एक टर्म नीचे उतार लो, 15x, सारे टर्म्स लोगे तो भी चलेगा, आई एम टेकिंग वन टर्म वन स्टेप एट अ टाइम, right? So -4x square is required, but I have x, so what do I multiply to get -4x square? I need to multiply by -4x. If you don't understand this, once again, -4x square divided by x is एक x cancel हो गया and I get -4x, hence I'm multiplying by -4x. So if I multiply this equation by -4x, क्या हो जाएगा, -4x square and plus 12x. I will have to subtract, so that signs will change, and -4x square plus 4x square gets cancelled, 15x minus 12x is 3x, and I bring down the 9, the remaining term. Now I will have to multiply by 3 बिकॉज मुझे चाहिए 3x। वैसे ही करना है जैसे यहाँ किया था, 3x को x से डिवाइड कर लो, 3 हो जाएगा। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 3, 3x माइनस 9 एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज इट वाज अ फैक्टर, तो मुझे रिमाइंडर सब्ट्रैक्शन के बाद कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, इट हैज टू बी 0, राइट? दैट मीन्स कमिंग बैक टू दिस, x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 15x -9 is, एक फैक्टर तो है x -3, that is divisor, multiplied by quotient x square minus 4x plus 3, and remainder is 0, remainder is 0. All right, now look at this. Have I completely factorized it? No, the answer is no, because here he says hence factorize the given expressions completely. It is no, because यहाँ पे quadratic factor है. Once again we have to use the factorization method that we learned in the quadratic equations part. So 3 के factors, x square minus x minus 3x plus 3, the factors of 3, right? Now that is equal to x minus 3. We take x common from the first two terms, it is x minus 1. Minus 3 common from the last two terms, we get x minus 1, right? So x minus 3, x minus 1, and x minus 3. This is complete factorization. इसको थोड़ा और simplify कर लेते हैं. x minus 3 दो बार है, तो I will write it as x minus 3 the whole square into x minus 1. Now this becomes the complete factorization. All right. Now, once again, this part, the similar part is that I want you to try this question. All right, this question and this question. So I'm giving this two questions as homework, right? Don't worry, factorization और मैं पढ़ा रहा हूँ, because there are lot many problems. I have written this problem purposely so that आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं, यही से problems copy कर लो, right? इसको pause कर लो और copy कर लो, यही से problem आपको मतलब सारे past year questions मिल जाएंगे. Now this is something different, hence because यहाँ पे कुछ अलग है, right? Hence I'm solving this. यहाँ पे दिखा तो सारे वही टाइप के questions हैं. All right. Now, question is similar. We have to show that 2x plus 7 is a factor first and then factorize completely. All right. So let me say P of x is equal to 2x cube. All right. Now he's asking for to check whether he or to prove that this is a factor. So 2x plus 7 को 0 ले लिया, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, and value of x is -7 upon 2, right? You have to be very patient about this problem. Okay, first of all,
P of minus 7 upon 2 is 2 into minus 7 upon 2 whole cube plus 5 minus 7 upon 2 whole square minus 11 and minus 14. All right, step by step जाते हैं. 2. All right, negative term raised to odd power, it will remain as minus. 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर तो मुझे मालूम है 49 है. 49 को फिर से 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 and 6, 28 and 6, it is 343 divided by 2 का क्यूब 8 plus 5. Negative term raised to even power is plus. 7 square is 49, 2 square is 4. And this is 77 upon 2 minus 14. Step by step. 2 4s are. Okay. Minus 343 divided by 4 plus 5 9s are 45. 5 4s are 20 and 4 it is 24. So this is divided by 4 plus, if I take this 77, if I take this together, these two terms together, 2 LCM है. यहाँ पे denominator is 4, so I can subtract easily न्यूमरेटर. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते वक्त टाइम नहीं लेना है आपको. देखो 245 है, 245 प्लस 55 इज 245 प्लस 55 इज 300 एंड 343 है तो ऊपर का 43 ऐड हो जाएगा 98. अगर मैं जो बात कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, डू इट एज यू कैन डू, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू. प्लस यहाँ पे 9 एंड 6 में से 2 गया 49 अपॉन 2. Now if you observe 98 upon 4, इसको 2 से डिवाइड करो तो minus 49 upon 2 plus 49 upon 2 and the answer is 0. And the answer is 0. P of minus 7 by 2. The answer is 0. That means 2x plus 7 is a factor of P of x. Right? 0 आ गया रिमाइंडर. Now the question is, hence factorize the given expression completely. All right, डिवीजन यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको. डिवीजन यहाँ पे डिवीजन देख लेते हैं. किससे डिवाइड करना है? 2x plus 7. ये डिवाइजर है मेरा. 2x cube plus 5x square minus 11x minus 14. So if I know 2x plus 7 is a factor, एक फैक्टर तो पक्का है तो उसे डिवाइड करके देख लेते हैं. मेरे पास 2x है. I have 2x. I want to convert it into 2x cube. What should I multiply with? I should multiply this by x square. If not, आपको नहीं समझ में आए क्या करना है? 2x cube मुझे चाहिए. I want 2x cube and I have 2x. 2 तो कैंसिल हो जाएगा. x cube upon x is x square. All right. Now, if I multiply this 2x cube plus 7x square, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. Subtraction, sign changes. 2x cube minus 2x cube. 5x square minus 7x square is minus 2x square. Right? एक टर्म और नीचे ले लेते हैं minus 11x. Now I have 2x and I want 2x square minus, so I will have to multiply by minus x. अगर नहीं समझ में आए, I want 2x square minus 2x square and I have 2x. 2 gets cancel. एक x निकल गया तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस x से. So I'm multiplying by minus x and I get minus 2x square and minus 7x. I have to subtract so that the signs changes, and then with the subtraction 2x square gets cancelled. Minus 11x plus 7x is 4x.
-14. I will now have to, because मेरे पास 2x है और मुझे 4x चाहिए, I will have to multiply by 2, and if I multiply by 2 I get 4x, and so कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे. This is minus, so I will have to multiply by -2x. Sorry, -2 से multiply कर रहे हैं. This is -2. So we get this, then we subtract, and when we subtract the same terms, the remainder is of course equal to 0. All right, of course equal to 0. So what has happened now is, let me take this, let me factorize this completely now. I got 2x cubed plus 5x squared minus 11x minus 14. One of the factor is 2x plus 7, which is a divisor, into quotient, that is x square minus x minus 2. 2x plus 7. अभी मुझे ध्यान दो, इसको -2 है, फैक्टराइज करना ज़रूरी है. x square, the factors are -2x plus x minus 2. Now that is equal to 2x plus 7. I take x common from the first two terms, I get x minus 2. Then I take 1 common from the last two terms, I get x minus 2. Hence, my complete factors are, for 2x cubed plus 5x squared minus 11x minus 14, I get 2x plus 7, x plus 1, and x minus 2. So this becomes my complete factorization. All right. Okay, I hope you are understanding the division part now. So again and again I am repeating, अगर division part जानना है तो आपको बार बार ये videos ये repeat कर लो questions पीछे से, right? Let me solve this question. Right, this is again the repetition of what we have done. So here again, this is a 2024 recent past year paper जो है उसको मैं solve कर रहा हूँ. Okay, so let me say that p of x is 3x cubed plus 8x squared. Now, let me read the question. The polynomial 3x cubed plus 8x squared minus 15x plus k has x minus 1 as a factor. Find the value of k. पहले इसका काम कर लेते हैं, बाद में आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. So, if ये बोल रहे हैं कि x minus 1 factor है, is a factor of x minus 1 of p of x, sorry, right? That means we know that अगर वो फैक्टर है तो p of 1 कितना हो गया, 0. कहाँ से आ गया 1? x minus 1 का वैल्यू 0 लेना है, x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. ऑलराइट, सो p of 1 is 0. दैट मीन्स जहाँ पे भी मुझे x दिखे मुझे 1 से रिप्लेस करना है. is equal to 0. So this is 3 plus 8 is 11 minus 15 plus k is equal to 0. So k minus 4 is equal to 0. That means the value of k is equal to 4. Once this is done, my actual polynomial is now, polynomial क्या है मेरा actual, 3x cubed plus 8x squared minus 15x plus k, that is 4. All right, remember ये बोल रहे x minus 1 is a factor. अपने को कुछ करना नहीं, x minus 1 is a factor. Now he is saying hence factorize the complete thing, right? Now hence factorize the complete thing मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, I will have to divide. What is a divisor in this case? The factor, that is x minus 1. किसको डिवाइड करना है? पॉलिनोमियल को 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर minus 15x plus, remember the value of k is
4. Okay, now I have x and I want 3x cube. I want x and I want 3x cube. So I will have to multiply by 3x square. कहाँ से लेके आया 3x square? So 3x cube I want. And I have x. So I will divide this 2. Right? 3 ऐसे ही रहेगा x upon x cube upon x raised to 1 है. Law of indices से भी अगर जाओ तो x raised to 3 minus 1 हो जाएगा. That is x square हो जाएगा. So I get 3x square. सो इसको अगर मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई गेट 3x क्यूब, राइट, माइनस 3x स्क्वायर. आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, सो दिस minus plus gets cancelled. 8x square plus 3x square is 12x square. I take one term at a time, right? This is minus 15. So I have x now and I want 12x square, right? 12x square को x से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है अपने को? 12x मिलता है. So I get 12x square minus 12x. Subtract this, right? Minus 15x plus 12x is minus 3x. I take the remaining term down, that is plus 4. I will have to multiply by minus 3. कहाँ से आएगा minus 3? Minus 3x I want. इधर मुझे minus 3x चाहिए और मेरे पास है x. तो I will have to divide by x. So this becomes minus 3. So I will have to multiply by minus 3. So minus 3x and minus 3 into minus 1 is plus 3. If I subtract this, okay, I think there is a mistake over. Let me again repeat the question. I'm so sorry, यहाँ पे mistake हो गया था. Right, this has to be 11x square. I wrote it as 12x square minus 15x. So I will have to multiply by plus 11x. All right. So if I multiply by 11x, it becomes 11x square minus 11x. If I subtract this sign changes and I get minus 4x plus 4. So I will have to multiply by minus 4. So that becomes minus 4x plus 4. If I subtract them, same terms are there. It gets divided. It gets subtracted and the remainder is 0 as expected. So once again, coming back to the question, the polynomial 3x cube plus 8x square minus 15x plus 4 is dividend is equal to divisor into quotient, right? And plus remainder is 0, so I need not do anything. Now if you look at the second bracket, this again comes from the previous chapter, that is quadratic equation. I will have to take the factors 3x square minus 3x square minus rather plus 12x minus x minus 4. All right, so that is equal to x minus 1. 3x square, I take 3x common, I get x plus 4. Then I take minus 1 common, I get x plus 4. Now that is equal to x minus 1 into x plus 4 into 3x minus 1. This is the complete factorization, right? This will give you 4 marks. Now this is a last kind of problems. ये बहुत ही interesting problems है. अभी देखो यहाँ तक प्रीवियस प्रॉब्लम्स तक है ना, कुछ एक फैक्टर अपने को मालूम था. इफ यू लुक एट ऑल दिस प्रॉब्लम्स, वी वर नोइंग वन फैक्टर. एक फैक्टर अपने को इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ तो दिया हुआ था,
राइट। यहाँ पे जैसे 2x+7 फैक्टर है, यहाँ पे जैसे x-1 फैक्टर है, यहाँ पे देखो हर जगह पे एक फैक्टर दिया हुआ था। तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू डिसाइड किससे डिवाइड करना था, बिकॉज आई न्यू वन फैक्टर, राइट। Now यहाँ पे he is asking to factorize completely but he has not given any of the factor, तो ये सारा काम मुझे करना है। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जाते हैं, और ये ट्रायल एंड एरर बेसिस के लिए मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट बताता हूँ कि फैक्टर्स, एक फैक्टर अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। तो आई हैव कांस्टेंट टर्म एज 4, राइट। सो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 4 के फैक्टर्स होंगे 1, 2 एंड 4, दिस आर द फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे पहली चीज हमको इसमें से कुछ ना कुछ अपने को एक फैक्टर देने वाला है, राइट। तो ये आइडिया है इसका कि कौन सा फैक्टर होने वाला है, राइट। तो 4 के जो है 1, 2 एंड 4 है। सो आई विल ट्राई फॉर p ऑफ 1, चेक करता हूँ ये फैक्टर दे रहा है नहीं दे रहा है। दिस इज ऑल ट्रायल एंड एरर बेसिस, मतलब यहाँ पे आपका पहला फैक्टर निकालने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। वंस द थिंग इज डन, बाकी का क्या है, डिवीजन है, फैक्टराइजेशन, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, एवरी पार्ट रिमेन्स द सेम लेटर ऑन, ओके। सो 1 square -4 into 1 -4, definitely this is not going to be 0 because 1 cube 1 है, 1 cube 1 square 1 है, 1 + 1 2 होता है, 2 - 8 हो जाएगा, that is not equal to 0, तो ये काम नहीं करेगा। let me try for p of -1, let me try p of -1। p of -1 अगर मैं लेता हूँ -1 cube प्लस -1 square -4 into -1 -4, -1 का क्यूब -1, नेगेटिव नंबर रेज टू ऑड पावर इज नेगेटिव, नेगेटिव नंबर रेज टू इवन पावर इज पॉजिटिव, -4 into -1 is +4 -4, and you can see here x p of -1 is 0। मतलब जब तू x का वैल्यू -1 लेता है, x का वैल्यू जब तू -1 ले रहा है तो तेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x + 1 क्या होने वाला है, तेरा एक फैक्टर होने वाला है। रिवर्स केरी काम करते हैं अभी, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कोई तो एक फैक्टर मिल गया अपने को, राइट। तो यहां तक अपना एक काम तो हो गया, अपने को एक भी फैक्टर मालूम नहीं था, एक फैक्टर मालूम हो गया। रिमेनिंग पार्ट रिमेन्स द सेम because what we are going to do is, again we will have to divide the polynomial with by x plus 1, right? So this is x cube plus x square minus 4x minus 4। रिमेंबर मैंने 11th क्वेश्चन छोड़ दिया था, कुछ किया नहीं था, राइट। देखो यहाँ पे फैक्टर थियरम, रिमाइंडर थियरम यूज करने को बोला है और इसको फैक्टराइज करने बोला है। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन, अपने को फैक्टर्स दिया नहीं है, राइट। सो यहाँ पे let us come to this। now I have x, I want x cube, x cube के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो x क्यूब मुझे जो चाहिए और मेरे पास जो है, ऊपर मुझे जो चाहिए नीचे मेरे पास जो है वो लिख दिया और डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलता है, x स्क्वायर मिलता है, राइट। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, देन दिस इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर। I subtract this and I see that these are cancelled। नीचे आता है -4x -4, ऑलराइट। सो अगर मुझे -4x चाहिए तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय -4 and I get -4x -4। if I subtract this, the signs will change and they get cancelled and the remainder is 0 as expected। That means according to the question, x cube plus x square minus 4x minus 4 is equal to x plus 1 into quotient is x square minus 4 plus remainder is 0. All right. Now x plus 1. Now if you observe this, x square minus 4 can be written as x square minus 2 square. Now again, these are algebraic identities, x square
So a square minus b square is there, can be written as a plus b into a minus b, right? So this can be further factorized as x plus 1 is into x plus 2 into x minus 2. This was comparatively an easy problem. Let me take you to question number 11. Let me take you to question number 11 now, right? 2014 का question है, right? Let me write the polynomial. The polynomial is x cube minus 37x plus 26. Okay, now look at the constant term 26. तो क्या फैक्टर्स होने की पॉसिबिलिटी है? एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, फिर 13 होगा, या फिर 26 हो सकता है. These are the possibilities. All right. So let me try with 1. If I try with 1, what happens is 1 cube plus 10 into 1 square minus 37 into 1 plus 26. 1 plus 10 is 11. 11 plus 26 is 37. 1 plus 10 is 11. 11 plus 26 is 37. This is 37 minus 37. Luckily, अपने को factor पहले attempt में मिल गया. So if the factor is, that means when I take the value of x as 1, I get the factor. That means the factor has to be x minus 1, right? That means the factor is x minus 1 is a factor of the polynomial p of x. अब क्या करना है? फैक्टराइज करने को बोला है, तो डिवीजन के लिए जाएंगे हम लोग. सो हाउ डू गो फॉर डिवीजन? डिवाइजर इज x minus 1. The polynomial is x cube plus 10x square plus 26. All right. Now from x I want x cube, so I will have to multiply by x square. So x square से multiply करता हूं तो x cube minus x square मिल जाता है. माइनस साइन के साथ माइनस प्लस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अगर करता हूं x cube and x cube gets cancelled. 11x square minus 37x. 11x square minus 37x. So this is plus 11x से मल्टीप्लाई करना है मुझे. 11x स्क्वायर माइनस 11x, राइट? x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो सब्ट्रैक्शन होता है, ये माइनस ये प्लस. अगर ऐसी बात है तो 11x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. माइनस 37 प्लस दिस 11 इज माइनस 26x and plus 26. I will have to now multiply by minus 26, so that x multiplied by minus 26 is minus 26x. Minus 1 multiplied by minus 26 is plus 26. When I subtract this, the signs will change and they cancel each other, and the remainder is 0 as expected. Right? So now coming back to the problem, this means x cube plus 26 is equal to x minus 1 divisor into quotient plus remainder मेरा 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं. Now if you have to look at the second bracket, you will have to further factorize it. So x minus 1 x square, इसका फैक्टर्स आएगा प्लस 13x, 13 टू 26 होता है, minus 2x minus 26. So if I write this, x minus 1 x into x plus 13 minus 2 into x plus 13. So we have x minus 1 x minus 2
and x plus 13. These are the factors, right? Okay, let us come to the main part now. This was the homework. This I solved right now. All right, let's have a look at this question now, right? So there are again problems. I will solve only few problems now because हर एक problem में वही बात बार बार करनी है. So I'll solve this as a last problem जो अभी मैं कर रहा हूँ, because again same thing. Once you understand division, you understand everything, right? Okay, so I want you to try this problems. Okay, I'll solve this problem now. 12 is there. So the factors for this is 1, 2, 3, 4, 6, and 12. All right, let us try. Let p of x is 6x cubed plus 4x minus 12. Okay, now let me try p of 1. कोशिश करता हूँ 1 क्यूब. वैसे तो नहीं आएगा, दिख नहीं रहा है, ऐसे कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं, बट लेट मी ट्राई. इससे क्या होगा, देखो 6 प्लस 17 23 माइनस नेगेटिव टर्म एक ही है, तो 0 तो नहीं आने वाला है, इससे काम नहीं होगा. देन आई हैव टू ट्राई फॉर p ऑफ -1. तो क्या हो जाएगा, 6 ऑफ -1 का क्यूब प्लस 17 -1 का स्क्वायर प्लस 4 into -1 minus 12. Let me try this. This is -6 because negative term power is odd, so it will be minus, plus 17 minus 4 minus 12. So -4 minus 12 is it is not working again. This is also not equal to 0, right? Now let me try -2 because 2 से काम नहीं होगा ऐसे मुझे दिख रहा है. So 6 into -2 cube plus 17 into -2 square plus 4 into -2 minus 12. So this is 6 into -8 plus 17 into 4 -8 minus 12. So this is -48. ठीक है, 17 into 4 करना है. देखो tables, I'm very weak at tables, right? But I can multiply anything by anything at a very speedy way, in a very speedy way. तो कैसे करना है, नहीं आता है, ठीक है. 17 2 34 होता है, तो 34 and 34 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा. So let me write this as 68 एंड ये दोनों का टोटल -20. ये दिख रहा है अपने को 0 है, तो अगर x का वैल्यू -2 लेके मुझे 0 मिल रहा है, तो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे x का वैल्यू -2 लेके मुझे वो 0 मिल रहा है, राइट? तो फैक्टर होना चाहिए x plus 2, करेक्ट? सो विच मीन्स x plus 2 is a factor of polynomial. चलो यहां तक तो आ गया अभी, राइट? डिवीजन पे जाते हैं. डिवीजन करना है मुझे, राइट? सो डिवीजन करने के लिए किससे डिवाइड करना है, x plus 2 से. किसको डिवाइड करना है, 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर राइट. सो 3x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू x इज 6x क्यूब, 3x स्क्वायर इंटू 2 इज 6x स्क्वायर माइनस 17 minus 6 is 11x square plus 4x. So अभी किससे मल्टीप्लाई करना है, I want 11x square and I have x, so I will have to multiply by 11x. 11x square it becomes plus 22x
सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, 11x² कैंसिल, दिस इज -18x and -12. सो वंस अगेन कुछ तो वंस अगेन मैंने गड़बड़ किया. So this has to be 12x². So this becomes 5x² plus 4x. And this will be, then I will have to multiply by 5x. Okay, so this is 5x² plus 10x. I subtract this, sign changes, 5x² minus 5x². So this is -6x and -12. So if I multiply by -6, I get -6x -12. It is 0. All right. So x plus. So coming back to the question, क्या है? Factors क्या है? So which means according to the theorem, 6x³ plus 17x² plus 4x minus 12 will be equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ ऑलराइट, नाउ x plus 2, I will have to factorize this. 18 का factors 18 है, this is 3 into 6 is 18, so it is 18 1 जा नहीं होगा, 9 2 जा नहीं हो जाएगा, then 6 3 जा 18 is not possible. I think then we will have to keep it as it is because it will let me check once again. अगर देखो ऐसी कंडीशन होती है ना तो b² - 4ac का वैल्यू निकाल के चेक कर लो. तो b² का वैल्यू है 25 - 4 into 3 into -6. This is not equal to 0. The roots are not equal. So this is the complete answer. यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा. We cannot do anything about this, right? So this is the final factorization. Okay. So again come to this. यहाँ पे आपको if you want I can let us solve this one more or you try this questions. ये सारे questions जो है similar questions है. Let me come to this question. It's a MCQ 2023 का है. x - 2 is a factor of this. तो मतलब x - 2 अगर फैक्टर है तो x - 2 का वैल्यू 0 लेना है, तो x का वैल्यू क्या लेना है? 2 लेना है. दैट मीन्स p of x अगर या ऑफ कोर्स इतना सिस्टमेटिकली एग्जाम में एमसीक्यूज के लिए सॉल्व नहीं करना, दिस एवरीथिंग हैज टू बी अ रफ वर्क, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. सो यहाँ पे आई विल हैव टू टेक x as 2 and is equal to 0 because it is a factor. That means x का वैल्यू अगर 2 आता है, -12 is equal to 0. So -2k इधर आएगा 8 -12 is equal to 0. -2k -4 is equal to 0. So we have -2k is equal to 4. Value of k is 4 upon -2, which is equal to -2. Remember in the exam, जब ये question है, मान लो it is question number 20. So my answer would be question number 20. It is option C -2. This is the way I have to write the answer for MCQs. Don't just write the option number and leave it, because you have to write the option number और क्या option है ये भी आपको लिखना है. All right. Now coming towards the end of this part, right now. So this was the chapter remainder theorem and factor theorem. It will give you 4 or 5 marks. Only 2 concepts are there, एक remainder theorem, एक factor theorem. वैसे देखा जाए तो remainder theorem ही सब कुछ है. So मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर आप करो.
फॉर द एग्जाम, बिकॉज अगर आप मैथ्स में वीक हो, आई एम डूइंग दिस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वीक इन मैथ्स. सो अगर आप of course this will of course help you in any case, but स्पेशली फॉर द वीक स्टूडेंट्स, कि अगर मैं वही चैप्टर करा रहा हूँ जो आप, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो आसानी से, राइट. आफ्टर दिस, most probably I'm going to the chapter probability, this which is one of my favorite chapter, right. So in case, as usual, in case if you have any doubts in future also, right, if you want some career counseling, if you want some if you have, and because I suppose you are 10th standard student, so if you're looking for career counseling after 10, because randomly uh, uh, किसी के कहने से या अपने को लग रहा है because of that we are going, it may be a great risk, because the survey says that 70% of the people right now, as of now, in India, are not satisfied with their jobs, राइट. तो अगर आपको सही दिशा की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स और वेदर इट इज़ योर करियर, कंप्लीट करियर, योर लाइफ, so feel free to connect me with me on this number, right. You can WhatsApp me on this number and I'll get back to you. Thank you very much for the time. नोट्स निकालना इसका अपने आप सॉल्व करना, बिकॉज होमवर्क मैंने दिए हैं बहुत सारे. थैंक यू वेरी मच.